Welcome 12th class again in today's class, and today we will complete our chapter that we are doing from last 3 days. Today is fourth day of this chapter, The Enemy, from your book Vistas. The chapter is written by Pearl S. Burke, famous Nobel Prize winner in literature, and The Enemy is also a very lovely and good message giving short but long story. It is kept in short stories under the category, but even then, it is the most lengthiest story in your book Vistas. So let's start where we left. So now the Dr. Sado was mentally very calm and feeling peaceful that because he has helped the American prisoner Tom to escape from Japan by giving a boat and told him to wait until a Korean boat came there, and also kept sufficient food, water bottles, torch, Japanese cloths, etc., whatever she would be needed there living in the boat. And now again he encountered with a journal. Second time he is, and again he is meeting to the journal because journal called him, and now the journal was also feeling that very unhappy because he forgot to send the person to assassinate the prisoner of America, and feeling very unhappy and feeling very giving many explanation, feeling doing apologized profusely for having neglected to keep his promise, and offering this explanation that having fallen so ill, he had thought only of himself and his recovery, nothing else. That time nothing was going in his mind, he forgot everything. He was thinking about only his recovery, how he could recover from his illness. So that's why he forgot everything. He could not kept his promise. That's why. And enemy killed had quite escaped his only of himself and his mind. He wanted Sado to know that this lapse should not be. उसने कहा ये मत समझना कि ये जो मेरी कमी रही है ये मेरे दिमाग से निकल गया और तुम उसको भेजने के लिए कि उसको एसिनेट करने के लिए, तो इसका मतलब ये मत समझना मिस्टेकन फॉर ए लैक ऑफ पैट्रियोटिक फीलिंग्स of his part for declaration of duty, and he hoped that should the matter come out into the open he would support his explanation. उसने कहा बिल्कुल चिंता मत करना, अगर किसी को पता चलता है तो मैं सब संभाल लूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, डोंट नीड टू बी वरी, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि तुमने उसको शेल्टर दिया था तो मैं सब जो है वो संभाल लूँगा, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उसने कहा उसको. Now Dr. Sado was standing again in his veranda and was thinking that he would have gone from the island. Hopefully, he would got any Korean boat there. So that's why he was feeling a very satisfactory feeling there. Because now there was no flashing light from the island which indicated that the prisoner had been rescued. मतलब वहाँ से कोई टॉर्च लाइट आपका सिग्नल नहीं आ रहा था, तो क्योंकि उसने इसको बताया था ना कि रोज डेली मेरे को सिग्नल दे देना, जब तक तुम वहाँ पे हो तो मैं समझ जाऊँगा कि यस यू आर कंफर्टेबली लिविंग देयर. हाँ, तो इसलिए उसने कहा कोई टॉर्च लाइट का सिग्नल नहीं आया, तो दैट मीन ही हैज बीन रेस्क्यूड, वो वहाँ से रेस्क्यूड हो चुका है. एट दिस मोमेंट ही सडनली रिकॉल्ड ऑल द वाइट पीपल ही मेट व्हेन ही वाज लिविंग इन अमेरिका. उसे अब वो सारे लोग याद आ रहे हैं जिस समय वो अमेरिका में रहता था, जिन जिन लोगों से वो मिला था, वो एनाटॉमिक प्रोफेसर एंड हिज साउथ एंड वेरी टॉकटिव लेडी, दैट everything, every person he is reminiscing,
and he is thinking that the dull professor and his silly talkative wife, remembering his old teacher of anatomy and the face of fat and untidy landlady, thinking of all the difficulties and miseries he has to face living there. कौन कौन सी उसको परेशानियाँ उठानी पड़ी, खराब एक छोटा सा स्मॉल रूम ही हैड टू लिव इन, और कैसा खाना वहाँ पे मिलता था, हाउ द अमेरिकन्स हैव ग्रेट प्रेजुडिसेस against the Chinese, against the Japanese people. So that's why he was all things reminiscing in his mind and asking a question to herself why he had helped that person in his rescuing, in his escaping. अपने आप से पूछ रहा है क्यों बचाया मैंने उस आदमी को, क्यों नहीं हैंड ओवर किया पुलिस को, जबकि वो सारी चीज़ें याद कर रहा है कि उसके साथ क्या बिहेवियर होता था जब वो वहाँ पर अमेरिका में था। ठीक, तो वो अपने आप से ही ये सारी बातें कर रहा है। तो इस तरह से अब वो अपने आप से पूछ रहा है, हाँ, और वो he filled with him a revolution and refinement his feeling of superiority, and the face of the American prison of war came to his mind and he was again filled with revolution. This made him wonder why he had gone to such pain to save the man. इतनी परेशानियां उसने उस आदमी को बचाने के लिए why, क्यों उठाई, क्यों किया, asking a question to himself. So in this way the story thus focuses on a doctor's sense of a duty to save the lives as opposed to a patriotic citizen duty bound to hand over the prisoner to the authorities. कि उसने अपनी ड्यूटी को जो है सबसे पहले रखा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट he thought about his personal duty of being a doctor to save a person's life, rather the patriotic feeling to hand over the prisoner to the police of Japan. No. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये कहानी हमें यही मैसेज देती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प करना उसकी परेशानी में, दैट इज़ हिज और हर फोरमोस्ट ड्यूटी. हमें अपने ऑब्लिगेशन को नहीं भूलना चाहिए. तो इस तरह से इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू राइज अबव नैरो प्रेजुडिसेस, कि हम मानव जाति को अपने छोटे छोटे जो हम एक दूसरे के प्रति धारणाएं बना लेते हैं, है ना, उन सब से हमें ऊपर उठना चाहिए. छोटे छोटे जो है अपने मतभेद जाति के लिए, देश के की वजह से हमें एक दूसरे से वैमनस्य वाली फीलिंग्स जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका वॉर का जो रिजल्ट है वो सबके लिए हार्मफुल होता है. कोई भी हो, आप देखते रहते हैं रोज न्यूज़ में कि कैसे इन सच ए यंग एज आर मार्टायर्स are giving their life on the border of Kashmir, on the border of China. Recently you saw how many people died there. So how in a young age, even some of them are unmarried, only 20 or 21, 23, 25, 27 in the such a young age. So war is always harmful, never fruitful. किसी के लिए fruitful नहीं होता, but to save a country, it is also duty. And they are performing their duty there on the border. but तो यहाँ पर जो वॉर है उसको यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है पूरी स्टोरी में, कहीं पर भी वॉर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैसेज ये दे रहा है कि वॉर जो है वो क्या है. जैसे मैंने आपने लिखा कि एन एंटी वॉर स्टोरी है ये. इसमें जो है वॉर के अगेंस्ट जो है राइटर की फीलिंग्स वो हमें पता चलती हैं. ह्यूमननेस इन वॉर जो है वो होनी चाहिए. पैट्रियटिज्म एंड द मेडिकल प्रोफेशन जो है वो क्या है, दोनों अलग हैं. कि हम पैट्रियोटिक फीलिंग को अपने मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि इसमें मेन कैरेक्टर ने किया. तो ये मैसेज यहाँ पर ये दे रहा है स्टोरी हमें. और क्या कह रही है कि इट इज वी शुड राइज अबव नैरो प्रेजुडिसेस of race and country and emerge as sensitive and empathetic human being. Regardless of the lurking dangers and the open defiance of these hitherto loyal servants, Sado comes across as a doctor who takes his role as a savior of life. उसने ऐसे क्या काम किया है, इसमें जीवन बचाने वाले का रोल अदा किया है उसने, है ना. एंड सैडोज वाइफ हैना लव्स हर हस्बैंड डियरली. उसकी जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है. इन एवरी
डिसीजन में उसको हेल्प करती है, जो भी उसका डिसीजन होता है हर एक में उसको हेल्प करती है, ऑपरेशन में भी हेल्प करती है, एनेस्थीसिया लेने में भी हेल्प करती है, वो उसको बचाना चाहता था उसमें भी हेल्प करती है, एवरीथिंग शी kept standing with her husband in every situation. उसको छोड़ के नहीं गई है कि तुम्हें करना है तुम करो मैं जा रही हूँ, नो. And she is sensitive to the situation before them and is a human first and a Japanese woman later. क्या रोल अदा किया उसने कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज अ वाइफ, शी इज अ ह्यूमन बीइंग, रादर उसके बाद वो एज ए जैपनीज लेडी है. जैपनीज लेडी होने के बाद जो उसका ड्यूटी थी वो सेकेंडरी है. एज ए वाइफ उसकी जो ह्यूमन बीइंग जो ड्यूटी है दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर हर. ये मैसेज दिया है ना कि कैरेक्टर ने. एंड कन्वेंशनल बाय नेचर शी इज ऑल्सो कमिटेड टू सपोर्ट हर हस्बैंड इन ऑल हिज एंड्योरेंस. She displayed remarkable strength of character, standing by her husband in his efforts to save the American and nurturing him back to health. हर हाल में वो अपने उसके साथ ही खड़ी रही, अपने हस्बैंड के जो डिसीजन था उसी में एवरी टाइम हर एक में उसने अपनी सहमति दी और उसके साथ ही खड़ी रही. आप देखते हैं कि जो डॉक्टर सैडो है वो कैसा क्या प्रूव होता है, उसने क्या प्रूव किया, उसके कैरेक्टर में क्या क्वालिटीज हमें देखने को मिली. ही इज काइंड हार्टेड, ही इज ए वंडरफुल हस्बैंड ऑल्सो, है ना. ये क्वालिटीज हमें देखने को मिली. एंड ही इज ए काइंड हार्टेड मैन एंड ऑल हिज जूनियर्स हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. एंड सम डॉक्टर सैडो इज ए गुड, ब्यूटिफुल, लविंग एंड प्रोफेशनली साउंड मैन. क्लियर? ओके. All difficult words write in your notebook so that you can add them in your vocabulary, you can remember them, you can use them in your writings, and also complete all the question answer. Go through, I told you some important questions also I'm sending you in a PDF, so go through them and try to learn also them so that you can score good marks in your coming exams. Okay, thank you and have a nice day. Bye. So today our chapter is over.